As you all know, work is going on. I did mention this in my tweet announcing the press conference that work is going on and we are very close to coming up with an economic package which will be announced sooner rather than later. However, in the meanwhile, many statutory and regulatory compliance related issues, since we are in March, which is normally the last month of the year end, we need to address. There has been several calls, I agree, for us to respond to in terms of deadlines that people are struggling to keep. So therefore, today we have come up with a comprehensive, in detail announcement of what is the relief in terms of statutory and compliance regulations that people will have to know about. As was explained by Mr. Malhotra, I'll first do it in English, post that the Hindi would be done by Minister of State Shri Anurag Thakur. For a broad understanding, I would like to lay it like this. Compliance and regulation related to income tax related matters will be my first set of announcements. Then compliance and deadlines related to the GST will be my second set of announcements. So will be my third set, which is customs and central excise related. Then I move over to talking about compliance and regulations under the MCA, Companies Provision, Ministry of Corporate Affairs. There are some of them like that. Then there is also an announcement related particularly for the IBC related matters, insolvency and bankruptcy code related matters. Then there is a specific set of announcements for fisheries compliances because their brood stock and other things come from abroad. Sanitary, phytosanitary matters are involved in it. Then I move over to bank related compliances, not so much anything to do with economic matters here. There could be economic matters also related to banks, but I am strictly confining today for bank related, that is Department of Financial Services related, but strictly compliance and statutory regulation. And then lastly, I come to commerce related announcements on regulation and compliance. So if I can start, before I start, I'll ask Anurag ji to go ahead with Hindi. नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें जो आजकल कोरोना वायरस करके आ रही हैं, उसके चलते जो समस्याएं अगर बिजनेस हाउसेस में या कामकाज करने वाले व्यक्ति को आ रही होंगी, तो उसके लिए किस तरह से राहत दी जाए, उसलिए कुछ क्षेत्रों के लिए आज घोषणाएं की जाएंगी ताकि जो वैधानिक रूप से आपको अनुपालन करना होता है, उसमें जो दिक्कत आ रही है उसको चलते हुए आपको दिक्कत ना आए, उसके लिए कुछ क्षेत्रों के लिए घोषणा की जाएंगी, चाहे वो आखिरी तारीख इनकम टैक्स को लेकर हो या जीएसटी के रिलेटेड इश्यूज हों, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के लिए हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंप्लायंस की बात हो, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर एमएसएमई वर्ग को ज़्यादा उसमें तकलीफ ना आए, तो उससे रिलेटेड फिशरीज, बैंक रिलेटेड और कॉमर्स रिलेटेड ये सारे इश्यूज़ को एक एक करके माननीय वित्त मंत्री जी आप सबके सामने रखेंगे ताकि लोगों को इस संकट की घड़ी में ज़्यादा कष्ट ना हो और राहत भी दी जा सके और अनुपालन करने में दिक्कत ना आए। So now I go to the income tax related. I am referring to the financial year 18-19. Financial year 18-19, the last date for income tax returns for the financial year 18-19 will be now extended to 30th June 2020, 30 June. For delayed payments made till 30th June
interest rate reduced from 12 to 9%, and this is strictly referring to the financial year 18-19 only. The last date for income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020, and for the delayed payments, interest rate has been reduced from 12 to 9%. I repeat, it's year 18-19, financial year 18-19. No extension but on delayed deposit of TDS. I've gone to the next point. No extension but on the delayed deposit of TDS, only reduced interest of 9% will be charged on the delayed deposit till June 30th, 2020. The current prevailing interest rate is 18% for the delayed deposit on TDS, and that's been now reduced to 9%, and the delayed deposits are already anyway extended to 30th, but the interest will be 9% only and not 18%. वित्तीय वर्ष 2018-19 की जो लोग रिटर्न्स इनकम टैक्स की अब तक फाइल नहीं कर पाए, उनको विस्तार किया गया है। उनकी आखिरी डेट का 31 मार्च की बजाय वो अब 30 जून 2020 होगी, और इसमें जो डिलेड पेमेंट्स जो 30 जून तक करनी थी, उसको लेकर जो ब्याज दर 12% थी, उसको कम करके 9% कर दिया गया है। ये राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो 31 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में है। अब वो 30 जून तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी 2018-19 की इनकम है, उसके ऊपर आपको 31 मार्च तक करनी थी, उसकी बजाय अब आपको 30 जून 2020 तक करनी है, और उस पर जो ब्याज की दर है वो भी 12% से कम करके 9% की गई। जहां आपके टीडीएस के डिपॉजिट के लिए विस्तार नहीं किया गया, उसको अगली डेट नहीं दी गई, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो 18% की बजाय मात्र 9% चार्ज किया जाएगा, और ये भी तब तक जब तक आपकी 30 जून 2020 तक डिलेड डिपॉजिट, उसकी भी डेट वही रखी गई है। तो तारीख एक ही रहेगी और उसमें ब्याज की दरों में कमी लाई गई।